Please start. Good evening, all. We'll start shortly. All right. So, welcome all in our weekly webinar, Market Masterclass with Religare. So, most of you know, for those who are joining us for the first time, I'll just brief how this presentation flows. So, we start with a quick preview of the market action during the week, followed by our outlook on key indices, Nifty Banking Index, stocks to focus on, sectors to watch. We'll cover everything in next 20 minutes, followed by the Q&A session. So you have this Q&A button in front of your screen. All you need to do is just press that, write your query and send it to us during the Q&A round. सो आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीकली वेबिनार में। और इस वेबिनार का बेसिकली पर्पस है कि आप नेक्स्ट वीक के लिए तैयार हों। नेक्स्ट वीक काफ़ी इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। संडे के दिन एक स्पेशल सेशन यूनियन बजट का, तो किस तरीके से प्लान करना है, अपने आप को तैयार करना है, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे नेक्स्ट 20 मिनट में। उसके बाद कोई भी सवाल है आपका रिलेटेड टू मार्केट, एनी पर्टिकुलर सेक्टर, थीम, वो सभी हम डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग द Q&A सेशन। So let's start with a disclaimer that it's more of educational webinar wherein we share our observation. So it's not a trading or investment recommendation. So before you make any decision based on the information shared, please do check with your financial advisor. तो जो भी हम बात करने वाले हैं बेसिकली हमारी ऑब्जर्वेशन है। इसका ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखते हुए उसको आप देखते हैं तो फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर आप बात करें। सो दिस इज हाउ द मार्केट्स ended this week. So last week was definitely a dampener. This week we saw some respite, roughly around 1% gain for both Nifty and Sensex. Sectorally, it was a mixed trend. Energy made a strong comeback, followed by realty, metal, media, and banking, while FMCG, IT, pharma, and auto, they've ended on a subdued note. Among the gainers, BEL topped the list post numbers, followed by ONGC, Axis Bank, Adani Ports, Adani Enterprise. So, two of the Adani group of stocks were among the top losers last week, and this time around we saw a recovery. So, they were among the top 5 gainers within the Nifty 50 basket. On the losing side, Asian Paints 10%, Maruti 5%, Max Health, Kotak, M&M. So two of the name from the auto basket which saw profit taking or decline during the week. तो ये पूरे वीक का लेखा जोखा जो लास्ट वीक हमने देखा था कि मार्केट में करेक्शन हुआ है, उसके बाद एक स्टेबिलिटी आते हुए थोड़ा सा पॉज लेते हुए बाजार को और 1% के गेन, सेक्टरली मिक्स्ड रहा, बट ज्यादातर सेक्टर आपको पॉजिटिव साइड पे। जो नेगेटिव है वो मीन्स कुछ खास नेगेटिव नहीं है। अगर एफएमसीजी को छोड़ दें जहाँ पे कि 1% का कट है, बाकी सब थोड़े से म्यूटेड से ही कहेंगे हम, कोई मेजर करेक्शन नहीं रहा। गेनर लूजर्स में भी दोनों ही साइड पे आपने देखा कि डिसेंट मूव देखने को मिले अपसाइड डाउन साइड पे। नाउ कम्स द रियल पार्ट, वेयर आर वी हेडिंग। सो लास्ट वीक इफ यू रिमेंबर, it's a weekly chart. We were here on this red candle and we said that this line is very important, close to 24,900, 24,750. Despite choppiness, volatility, so much of noise, when it comes to the global clues, still Nifty could manage to defend this level, this trend line. So what this shows that yes, bulls have not lost the battle yet, and they are still trying to hold the key averages. Means on the daily chart 25,150, on the weekly chart 24,900. That's the zone basically where we are seeing
market or bulls making an attempt to hold, right? Next week also, since it's an important week, we have this big event of union budget which will unfold. 24,900 will continue to be the key make or break area. Intraday 25,150, that's the first line of defense. The 200 days, in case if we fail to hold, then 900 to 24,600 is something that the market is going to attempt in the following sessions, right? Upside 25,600, that will be the strong hurdle, means we have multiple levels to watch out for on the daily basis, but when it comes to weekly, for the entire week, we are saying the 25,600, in case if we manage to cross, then 25,900 is something the market is going to attempt. So in short, for bulls to regain some strength, we need to cross 25,600. In case bears should be on the forefront, or they reclaim the negativity, 24,900 will be the key area to watch out for positionally. तो देखिए, ये जो चार्ट है वो क्या दिखा रहा है, बेसिकली निफ्टी का वीकली चार्ट है, और हमने पहले लास्ट वीक जैसे बात की थी कि इस लेवल को काफी टाइम से डिफेंड करता रहा है, इस लाइन को ये काफी टाइम से डिफेंड करता रहा है, 3 बार से पहले टेस्ट हुआ है, एक बार बीच में जरूर गया नीचे बट सस्टेन नहीं हुआ। तो इस वीक जो कि हमारा एक इम्पॉर्टेंट वीक है, संडे के दिन एक स्पेशल सेशन है, तो किस तरीके से मार्केट बिहेव करेगा। अभी तक दो चीजें हैं इंपॉर्टेंट। पहला कि 25,150 जहां पे कि डेली चार्ट पे आपका 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है, वो क्या बताता है, वो बताता है लॉन्ग टर्म ट्रेंड। आप देखेंगे तो उस पूरे वीक में उसी लेवल के आसपास ही मार्केट ने टाइम स्पेंड किया है, नीचे आता था उस लेवल के पास, फिर रिकवरी, फिर गिरावट, फिर रिकवरी। ऊपर पे भी दिक्कत है 350 से लेकर 450 के जोन में, बट जो बड़ा प्रॉब्लम है वो 25,600 पे है। तो अभी के लिए क्या रिस्क है हमारे लिए कि जब तक 25,600 को क्रॉस करके सस्टेन नहीं करता बाजार, तो गिरने का रिस्क रहेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है अपने को नेक्स्ट वीक के लिए। और अगर इसने पहले ही 25,150 को ब्रेक कर दिया, फिर 900 की बारी आएगी, मतलब ये ट्रेंड लाइन इसने अगर ये ब्रेक कर दी, तो आप मान के चलिए कि 24,600 300 वाला जोन खुल जाएगा मार्केट में नीचे के लिए। अभी की प्रोबेबिलिटी क्या दिख रही है, अभी की प्रोबेबिलिटी मैं कहूंगा कि 50-50 है, या 60-40 रादर कहेंगे, कि बेयर्स थोड़ा सा अपर हैंड है उनका, बावजूद इसके कि बैंकिंग बहुत स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है, राइट। क्योंकि अगर देखिए, गिराना आसान है, 25,150 के नीचे अगर मार्केट थोड़े टाइम भी अगर सस्टेन कर गई, तो मार्केट में प्रेशर आने में टाइम नहीं लगेगा, बढ़ाना मुश्किल है। मीन्स उसके लिए आपको जितने भी हैवी वेट्स हैं जो कि अभी तक प्रेशर में है, बैंकिंग तो कर ही रहा है सपोर्ट मार्केट को, बट रिलायंस, HDFC, ITC, जिनमें ज्यादा प्रेशर आया है इसकी वजह से मार्केट में भी गिरावट हुई, उनको रिकवरी आना, उनको पार्टिसिपेट करना जरूरी होगा, राइट। इन सब के बीच में बट स्टॉक स्पेसिफिक की कोई कमी नहीं है दोनों ही साइड पे, दैट विल डिस्कस इन द फॉलोइंग स्लाइड्स। बट एज ऑफ नाउ ध्यान रखना है अपने को, डेली मींस फर्स्ट 25,150, इसके नीचे रिस्क रहेगा नीचे का, यहाँ पे 24,900, 750, 600 ये लेवल्स आएंगे। ऊपर सस्टेन करते हैं तो फिर 350 के ऊपर क्रॉस करते हैं तो 600 ऊपर पे भी, और फिर 900 के लेवल्स। प्रोबेबिलिटी अभी ज्यादा नेगेटिव साइड पे ज्यादा की है, तो उसके हिसाब से अपने को प्लान करना है। Banking, the next sector, the crucial sector, which we've discussed last week, that despite the correction, we were at a very critical level. This trend line last week, this red candle was the retest of that trend line. And this week, we could manage to defend that area. It was partially penetrated, but eventually we could manage to defend it decisively and ended with decent gains, roughly around 2% for banking index. So banking definitely the
most important aspect at present, which is helping to cap the damage in Nifty at present, while others are like showing mixed trend. So going ahead, 62, 60,200, 500 zone, that will be the first hurdle. And if we cross, then 61,000 is something that the banking index is likely to attempt. Downside, the earlier support 58,700, that will again be the immediate support, and major at 58,100. This trend line and this yellow line support, right? 58,100. If we break that, then banking is also compromised. देखिए, जैसे हमने बात की कि लास्ट वीक बहुत क्लियर था कि इन लेवल्स को डिफेंड करना जरूरी है, जो कि हमने ट्रेंड लाइन देखी बैंकिंग इंडेक्स में, निफ्टी में, तो उन दोनों को ही डिफेंड कर लिया गया वीकली चार्ट पे। अब क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट वीक है और यूनियन बजट है, तो क्या होता है ये देखना है। बट बैंकिंग की पोजीशनिंग काफी स्ट्रांग है कंपैरेटिव टू निफ्टी। आप रिकॉर्ड हाई के पास हैं, ज्यादातर स्टॉक्स ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे हैं, रिजल्ट्स भी ठीक ठाक आए हैं, तो बैंकिंग में कोई ऐसा मेजर चैलेंज नजर नहीं आ रहा है। बट क्या केवल बैंकिंग मार्केट को रिकवरी दिखा सकता है? वो केवल अकेले नहीं हो सकता, जबकि अगर बाकी सब नेगेटिव साइड में हो और केवल बैंकिंग होल्ड कर रहा हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूव हो जाए एच डी एफ सी, आईसीआईसीआई, देन इट्स डिफरेंट स्टोरी। बट अभी तक वो सिनेरियो है नहीं। बट टोन पॉजिटिव है, कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर है। 58,100 आपको ध्यान रखना है, जब तक आप इसके ऊपर है तब तक आप ठीक है, राइट। ऊपर पे फिर वही आपका 60,300, 61,000, ये ऊपर के लेवल्स होंगे। ओके, चलो, now let's talk about stocks. So before we talk about stocks, let's talk about sectors. So till yesterday, metal was the best performing sector with considerable strength across the board. And if you remember that last week we discussed about steel counters has, like more potential in comparison to the others. So it's not that the others took a pause, but the steel counters done exceptionally well. Be it Tata Steel, Jindal Steel, JSW Steel, they all performed well. So banking, metal, defense, and some of the counters from the energy basket. This is the area which you should be focusing on in the coming sessions for long positions. देखिए, सेक्टर्स, हम पहले स्टॉक की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ सेक्टर की बात कर रहे हैं कि किस पे आपका फोकस होना चाहिए, कंसिडरिंग कि मार्केट की सिचुएशन कैसी है। और अभी तक मेटल काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। आज के दिन जिस तरीके से कल रात को हमने देखा कि ग्लोबली काफी वॉलेटाइल स्विंग देखने को मिले, ना ही केवल बुलियंस में बट बेस मेटल में भी, तो उसका एक रबाब देखने को मिला। मेटल काउंटर्स आज करेक्शन में थे, बट उनका ट्रेंड रिवर्स नहीं हुआ। तो बैंकिंग, मेटल, डिफेंस और एनर्जी, अभी शॉर्ट टर्म में आपको इन पे फोकस करना है जब लॉन्ग साइड की पोजीशनिंग की बात करते हैं, राइट। शॉर्टिंग में नॉट सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक, जैसे आईईएक्स हो गया आपका, जहाँ पे वीकनेस है, देन केपीआईटी टेक फ्रॉम द आईटी बास्केट, वहां कोई सेक्टर स्पेसिफिक नहीं है, बट यहाँ पे एटलीस्ट जहाँ स्ट्रेंथ दिख रही है आपको बता दिया, राइट। सो नाउ basis the sectoral view, first banking, Axis Bank. So when it comes to stock selection, the easiest thing to do is to go ahead with the top performing name based on the price action.
And at present, within the private banking space, Axis has witnessed a fresh breakout from a consolidation range with strong uptick in volume. Here you can see that. This is the volume, almost like, 10, 15 weeks higher volume with price breakout. So here, the potential to sustain or outperform within the banking space seems high. So you can focus on Axis. तो देखिए, जैसे हमने बात की कि भाई फोकस कहाँ करना है, बैंक्स पे फोकस करना है, मेटल काउंटर्स पे फोकस करना है ऑन करेक्शन, डिफेंस काउंटर्स पे और एनर्जी काउंटर्स पे, अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें। तो बैंकिंग में से एक्सिस बैंक, जहाँ पे कि अभी पोस्ट रिजल्ट्स अच्छा मूव आया है, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है, प्राइस एक्शन अच्छा है, स्टॉक रिकॉर्ड हाई पे है, सारे फैक्टर्स पॉजिटिवली साइड पे अलाइंड है। तो यहाँ पे कंसिडरिंग द मार्केट टोन और स्ट्रेंथ बैंकिंग की एक्यूमुलेशन के बारे में सोचा जा सकता है, राइट। नेक्स्ट, फ्रॉम द डिफेंस बास्केट, द आउट परफॉर्मर, वेरी कंसिस्टेंट परफॉर्मर, BEL, Bharat Electric. So as you can see, that it's been a long consolidation journey, and which has finally ended on the this result day with strong uptick in volumes, right? This green candle and the volume as well. So this indicates a decisive traction followed by a pause in the last two trading session. And within the defense basket, this is like, the top performing name based on the relative outperformance as well. So here one can look for accumulation opportunity basis the recent breakout, and the stock is already at the record highs. तो जैसे हमने बात की कि बैंकिंग के साथ साथ डिफेंस में कौन सा नाम जहां पे सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है, वो BEL में लग रहा है। अभी रिजल्ट के बाद एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, वॉल्यूम काफी स्ट्रांग थे, स्टॉक में रिकॉर्ड हाई पे है। तो सारे ही चीजें अलाइंड है कि एक अच्छा मूव आने वाले टाइम में आपको देखने को मिल सकता है, राइट। लास्ट ऑन द लिस्ट, NTPC. So I hope that you have noticed that during the week we had stock like oil, ONGC, Coal India. They have done exceptionally well, and we have discussed about those counters in the past webinars, including NTPC as well. So as you can see that a very tight range consolidation means it's very narrow range, 320, 350. It's a very narrow range consolidation the stock was experiencing, followed by a rebound, then a breather, then again it's set to resume the trend. So here at least the downside seems capped. It's low beta counter. We have strong base, so everything is in the favor that the downside may remain capped, and we can gradually see this stock inching towards 375, 380 area. तो जैसे हमने बात की कि बैंकिंग हो गया, डिफेंस हो गया, तो एनर्जी बास्केट में से किसका नाम, तो NTPC का नाम। और क्यों? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में हमने देखा है कि बहुत सारे स्टॉक्स ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है विद इन द एनर्जी बास्केट। इनफैक्ट टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर रहा है इस हफ्ते का। तो NTPC भी तैयारी में है कि नेक्स्ट लेग के लिए कंसोलिडेशन रेंज के ब्रेकआउट और रिबाउंड के बाद एक पॉज हुआ था, तो आज इस वीक हमने देखा उसको रिज्यूम करते हुए। तो ग्रेजुअली ही सही, बट यहाँ पे आपको अप मूव देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। तो NTPC को भी आप एक्यूमुलेशन के लिए सोच सकते हैं, राइट। सो this is all from the presentation part. So if I have to summarize, since it's a very important week, positionally means from the weekly point of view 24,900, from the daily point of view is 25,150. These are the two key levels that you should write it down. And it's not that you have to react on every dip or decline on Sunday, means because Sunday is going to be a very volatile day for the market. And
But still, yes, on the closing, let's say if after one the budget ends and market try to settle down, so that will be the reference point where uh, we are heading. In case if we around the closing fail to hold 25 150, then it means market is set for a much lower levels in the coming session. And in case if we cross 350, then 600 and much higher levels is something that market is going to attempt. So index we have to be slightly cautious. Banking strong, comparatively structure. 58,100, something that you should keep a close eye on. Stock specific, we've discussed about BEL, XS, and NTPC, wherein we see strength. तो जैसे कि हमने बात की कि काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है, वॉलिटिलिटी रहेगी, तो हर चीज़ पे रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं है कि हर अनाउंसमेंट आई अब फिशरी के लिए आ रही है तो चलो अब फिशरी के स्टॉक्स बाय कर लेते हैं, अब रेलवेज पे कुछ बोल दिया चलो रेलवे के स्टॉक बाय कर लेते हैं. दैट इज़ नॉट द राइट वे टू ट्रेड और इन्वेस्ट. सो लेट द बजट अनफोल्ड. मार्केट को थोड़ा स्टेबलाइज हो जाने दीजिए, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा, इट्स ओके. थोड़ा सा प्राइस निकल गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, इट्स ओके, कुछ नहीं होता है. अभी गोल्ड सिल्वर में भी बहुत सारे लोगों का फूम होता, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रिवर्सल हो गया, बट या एक अच्छी करेक्शन देखने को मिल रही है. तो अभी देखेंगे किस तरीके से आगे वाले टाइम में बुलियन स्टेबलाइज होता है कि नहीं होता है. तो सेम होल्ड्स ट्रू फॉर स्टॉक्स ऑल्सो कि मार्केट खोलते ही या फिर प्रीएम्प्ट कर लेते हैं कि ये तो आएगा ही आएगा, रेलवे के स्टॉक्स चलेंगे चलेंगे, जरूरी नहीं है, राइट. तो थोड़ा सा क्वालिटी काउंटर्स पे और इंडेक्स और स्टॉक्स दोनों अलग अलग साइड पे मूव कर सकते हैं, इसमें कोई अभी वो नहीं है. इवेंचुअली वही उसी डायरेक्शन में होते हैं दोनों एक ही साइड पे, बट अभी शॉर्ट टर्म में एक रह सकता है कि आपको जो हमने सेक्टर्स बात की, चाहे वो मेटल हो, चाहे वो डिफेंस हो, एनर्जी हो, बैंकिंग हो, ये पॉजिटिव साइड पे नजर आए, और इंडेक्स शायद आपको थोड़ा सा लैकलस्टर नेगेटिव टोन के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आए, राइट. So this is all from the presentation part. So let's do a quick feedback poll. So can we have the poll, please? Yes. Okay, so I guess this is not the right poll. Just let me end this. Yeah. So please fill in your feedback and then we can start with the Q&A session. अपना feedback आप share कर दीजिए, उसके बाद जो भी सवाल है आपका, जो क्वेश्चन मार्क करके जो बटन है उसको आपको क्लिक करना है, लिख कर अपने सवालों को पूछना है. Those who are done with the feedback, they can start posting their questions. जिन जिनका हो गया है वो अपने सवाल लिखकर पूछ सकते हैं. स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरी से पहले अगर कोई सेक्टर स्पेसिफिक क्वेरीज भी हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं, और उससे सबकी हेल्प हो जाएगी. बेसिकली स्टॉक में तो आपके पास है, दूसरे के पास है नहीं है, पता नहीं, राइट. तो सेक्टर स्पेसिफिक कोई क्वेरी है, डेफिनेटली यू कैन आस्क. Okay, so let's start now with the Q&A part. Okay, what to do in mid cap and small cap? So it's a very valid question, considering that when it comes to the sectoral move, things are different. Mid cap, small cap, still not very clear trend. You know, they are highly volatile. Means this week mid cap gained roughly around 2%, and small cap 3%. So decent recovery. But when they fall also like with a higher intensity. So in my opinion, maintain stock specific view, not sector or market capitalization view. If you find any quality counters from the small cap space, mid cap space at a attractive level in terms of the valuation and
fundamental triggers, you can do consider them to accumulate. But from the trading point of view, you will find much better names in the large cap and larger mid cap space. So our preference remains the same when it comes to the trading. ट्रेडिंग के लिए आपको लार्ज कैप और लार्जर मिड कैप इन्हीं पे फोकस करना है, और मिड कैप को भी, स्मॉल कैप को भी थोड़ा सा टाइम अवॉइड करें आप. Pritesh ji has this question on metal sector. Is it still a buy on dips or exit? I believe that's still a buy on dip. 1 day of decline should not be considered as a reversal, because no doubt it's a very phenomenal rally that we have seen, and they are cyclical in nature, but there could be, like, more days of consolidation or maybe decline. Means for the Nifty metal index, we were at 12,500, means close to 12,500 we have closed yesterday, and today we have ended on 11,800, right? So roughly around 600, 700 point kind of a decline that Nifty metal index witnessed in today's trade. So there definitely would be days of consolidation ahead. So, but yes, stock like Hind Copper, Hind Zinc, if you are considering them, for maintaining the same kind of momentum, so that's too much of wishful thinking. Obviously, after such a phenomenal move, a pause, consolidation, correction is very normal, and steel counters looks comparatively better to me. Means Tata Steel, General Steel, JSW Steel, they are much better in shape in terms of further potential. So hope it answers your query. Okay. चौधरी जयंती लाल जी, जब हिंडाल्को के बारे में भी देखिए, हमने यही बात की कि मेटल एज अ स्पेस में अभी यहाँ पे आप एकदम बाय नहीं करेंगे, चाहे कोई भी काउंटर हो. धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करना है. जैसे हिंडाल्को केस में 900 से लेकर 850 ये अच्छा जोन है. तो अगर कोई डिप मिलता है उस जोन में, तो फिर आपको बाइंग के लिए सोचना चाहिए. अभी नहीं, अभी थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए मेटल काउंटर्स को भी. Chabir Das ji has this question on FMCG. So yes, देखिए यहाँ पे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की, स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट और जो आपके काउंटर्स हैं लाइक नेस्ले, HUL. Nestle posted decent numbers today, and the stock was also up. So we expect the positive tone to continue. So the outperformance from Nestle, Marico, Britannia, that is likely to continue. At the same time, stock like Colgate, HUL, they are slightly on the back foot, though they are also seeing some bit of a consolidation pause, but a decisive sign of recovery is not there. So stick with the quality names within the FMCG basket, wherein we are seeing steady uptrend. Okay. Okay, Maithil Kumaran has this question: can I buy DLF? So let's talk about realty sector, because realty as a sector definitely has witnessed very sharp correction in the recent past, and we are seeing a bit of a stability, but it's too early to call it a reversal. So in case if you are planning for investment, let's say for 1 year or more, then this definitely is a good level to start accumulating. It's not that something that you should go all in. So you can start accumulating at current levels, and in case if the sector also stabilize, means there's hardly any major correction from the current levels, then probably the better way to add is when the stock crosses 700 mark, not before that. So partly at current levels, and then add more in case if it moves higher, not lower. So hope it answers your query. Okay.
Health insurance counters may Himachali Rao ji has this question. So very mixed trend, but largely positive. Means short term could be mixed for ICICI and um, SDFC Life, SBI Life, uh, but overall the view looks positive. And for the sorry, you are asking about general insurance companies. So ICICI GI still like likely to continue with sideways negative. But yes, you can start accumulating. See, the idea is to accumulate them, not to uh, go all in like what I've shared about the other sector also. So here the possibility or indications are in the favor that it might consolidate in the near future. So I'm not anticipating any very strong recovery or a rebound, but yeah, they look stable. But it might take time to witness a strong and decisive recovery or reversal. Okay. IT sector, yes. So IT, see, we were anticipating that banking and IT might continue to hold. IT is still okay. It's not that there's something bad about the sector, but yes, uh, the underperformance of TCS and some of the other counters also from the basket, wherein from the mid cap IT space, wherein we are seeing profit taking. So it's kind of a very mixed setup. So Tech Mahindra, HCL Tech, Persistent, these are some of the names wherein we are seeing strength. So stay stock specific instead of sector specific in IT. Okay. Page Industries, stock specific query. So a sharp correction means from 49,000 to 32,800, and still there is no sign of reversal yet. Yes, there is support around this area and probably 30,000. So 30,000 is something where the last time the stock witnessed rebound. So you can start accumulating if the view is long term, and means 30,500, 30,200 is the best zone. So we are very close to that mark. So you can start accumulating, and on the higher side, 36,000, 38,000 will be the area where it might face resistance. So if the view is short term around that area, you may consider booking your profits. So hope it answers your query. Okay. Kunal has this question on IRDA. Is it at the lowest? Nobody knows. Kunal means there's hardly any traction in railway counters this time ahead of the budget, and it's going to be important to see what unfolds. When it comes to the budget presentation and all. Uh, but indications are not very encouraging, to be honest. Means until we reclaim 140, 150 decisively, I doubt that we are going to see any sustained up move. On downside, around 120, 110 is what we see as a support. So 110 to 150, that's broadly the range. We are currently in the middle of the band. Avoid any fresh position in case if you are stuck. You may consider maintaining stop at 120 and use recovery towards 140, 150 zone to reduce your positions. Okay. Okay, Harsh has this question on silver and gold. So, like Harsh, we discussed about the same during the presentation that after such a euphoric move, now we are seeing that gold and silver since yesterday, last night, we are seeing correction. So it's a first decisive correction after this month of October. Like for gold, we were at around 4200 mark dollar mark, and retraced to 3900.
And then we had this phenomenal rally towards 5600 mark, and then now we are at 49. So indications are pointing towards subdued move. So it's not that it's going to be outrightly a reversal. There could be a possibility. Nothing is impossible in the market, because what if something goes on in the geopolitical front and the market reverses completely? But as of now, the indications are in the favor of more of subdued correction, means price wise, time wise, both. Where we see support major around 46.50, 47.50. So we are currently at 51.46 in COMEX when it comes to gold. So around 300, $400 from the current level is something that we have the significant support. So one should not rush into a trade. If you are planning, to add, and in case if you have any existing position, 5250, 5300 will be the first area of resistance. So around that area, if it's a trading position, you may consider reducing your position, right? For silver, from $120 to $100, MCX में ये आपका जो 356 पे 356,000 पे ट्रेड कर रहा है करीब। तो यहाँ पे भी we are seeing that कि correction might continue the way silver has declined in today's session. A very sharp decline, means from 120 to 100 now. So 85, 87 is the next support. 83 to 87 rather is the next crucial base for silver. So maybe after this sharp cut, there will be more of time-wise correction, and which may result in further decline towards 85, 84, around that area. And then we may see again a recovery attempt. So as of now, yes, it seems like a short-term top for both silver and gold. So don't rush into a fresh position. In case if you have any position, use rebound or recovery to reduce, not to add. So hope it answers your query. Okay. So Harsh, there is no there could be a possibility due to liquidity in silver micro in comparison to the silver. So there's no set parameters, and since the liquidity is also fades out when the instrument corrects, so that could be the reason why we are seeing underperformance. Okay. Okay. So many stock specific queries, so let's address few more. So Hinzink, Mukesh Kumarji, like what we've shared, after this strong directional one-sided move, we may see further dip towards 580, 550 zone. So after 12% decline, still there could be more legs to this fall. So don't jump into averaging your existing position or buying fresh. 550 is definitely a good area. Around that area, you may consider adding hinging, but not at current levels, right? In case of bounce, 660, 670 will be the first area of resistance, then around 700. For national aluminum, 360 is what we are seeing as immediate support. In case if it fails to hold, then probably we may see further correction. So in case if you have any existing position, you may book profit. If you bought it at higher levels, then 360 should be a stop, and use any bounce towards 400, 410 zone to reduce. Okay. Okay. What else? Asian Paints was among the laggard this week. Yeah, 10% decline.
mm, not a very good sign, to be honest, because the way it has declined, it has engulfed the recent positive moves for almost several weeks. So what next? Around 2300, 2340 is what we are seeing as the immediate support. So in case if it fails to hold, then probably we are set for a newer low. So in uh, in case if you already have any existing position, 2300 is the zone where you might consider maintaining a stop and use any rebound towards 2500, 2580 zone to uh, exit your longs. Okay, this was a query from Mr. Ratnaka Thakur. Now, Jayanti Lal ji has this question on Bandhan Bank. बाय किया है. बंधन बैंक देखिए बहुत अंडर परफॉर्मर है. थोड़ा बहुत बीच बीच में कभी भी बाउंस आ जाता है, तो वही हो रहा है इसमें. जबकि पूरी मार्केट बैंकिंग इंडेक्स अपना रिकॉर्ड हाई पे बैठा हुआ है, ये अपने रिकॉर्ड लो के पास बैठा हुआ है. मीन्स एकदम अपोजिट साइड पे. तो बीच बीच में बाउंस आ रहा है, उसको आप कंसिडर करते हैं अगर अपॉर्चुनिटी की तरह, तो इसमें चांसेस फंसने के बहुत ज्यादा रहेंगे. 158 वो क्रॉस करता है तो फिर एक बार को एक रिकवरी में 170 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, बट वो बेस्ट केस सिनेरियो है. और 148 अगर ब्रेक हो गया तो दोबारा से यहाँ पे फिर करेक्शन आ जाएगी. तो आपको अगर इसमें रहना है तो 148 को ध्यान रखना है एज ए इम्पोर्टेंट लेवल टू exit in case if it breaks. Okay, so largely we have answered all the queries. Yes. So Harsh, that we have shared during the presentation, you can go back and check on our social channel about the Nifty levels. For very short term means 25 150. That's the make or break level. जब तक 25 150 के ऊपर है तब तक सब कुछ ठीक है, उसके नीचे जाएंगे प्रॉब्लम बढ़ जाएगी. Okay. Rajesh ji has this question on India shelter and Patek Babak. See, it's a new listing, Rajesh, but it looks okay to us. Means after this correction, we are seeing a rebound. So low volume counter, 840 is what we are seeing as an immediate hurdle. So in case if you have any existing position, 780 should be your stop. If the view is short term and around 840, you should consider booking your profits. In case if it crosses that area, then probably we are set for 900 plus. Okay, and Vatik Babak. Babak, that's it's very close to its major support area, around 1020, 1070. So extreme oversold. Possibility of bounce is there. Means 1150 could be the zone where it might find the resistance first and then around 1200 marks. So you can consider accumulating if the view is medium to long term. Short term, you can consider avoiding. So yeah, with this, we have answered all the queries. Thank you everyone for joining in. And of course, it's going to be an important session. So keep your position light on Sunday and let the market unfold. And then you can definitely decide based on the level that you've shared, sectors, stocks to focus on. So hope you have a favorable session on Sunday and afterward also.